Pakistan's unfolding electoral saga, early results indicate a tight race, with PTI-affiliated candidates seizing a narrow lead, closely trailed by PMLN and PPP contenders. This development follows nearly 12 hours of polling for national and provincial assemblies, concluding on Thursday. As the election outcome gradually unfolds, former Premier Nawaz Sharif steps into the spotlight, asserting that his party, PMLN, has emerged as the single largest entity post-polls. अपनी तरफ से ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, मरियम औरंगजेब की तरफ से, ये सब खड़े हैं दाएं और बाएं। हम सब आपको मुबारकबाद कहते हैं। इसलिए कि अल्लाह के फजल करम से इन इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है। मुस्लिम लीग नून इज द लार्जेस्ट सिंगल पार्टी इन द कंट्री टुडे आफ्टर द इलेक्शंस। और मैं समझता हूं कि हम इस मुल्क को भंवर से निकालने की तदबीर करें। हमने पहले भी अल्लाह के फजल करम से मुल्क को मुश्किलात से निकाला है और आज भी निकालने का एहतमाम कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं, जिनको भी मैंडेट मिला है हम दिल की गहराइयों से एहतराम करते हैं, चाहे वो पार्टी है, चाहे वो फर्द वाहिद है, चाहे वो आज़ाद लोग हैं। Sharif emphasizes the urgency for political unity, advocating for collaboration among various parties to address Pakistan's pressing challenges. मैंने शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई है कि शहबाज शरीफ साहब इस सिलसिले में आज पेशरफ्त करें और आज ही मोहतरम आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करें और मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करें, MQM के साथ मुलाकात करें, डॉक्टर सिद्दीकी के साथ मुलाकात करें और फिर मिलकर बताएं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि हम सब मिलकर इस भंवर से किश्ती को निकालें। Amidst the political maneuvering, tragedy strikes as 2 young PTI workers lose their lives, while a dozen others sustain injuries during a confrontation with police in Shanghai's Alpuri district. The incident unfolds against the backdrop of widespread protests by PTI supporters, alleging electoral irregularities. In response to these tumultuous events, PTI spokesperson Roof Hassan underscores the party's resilience in the face of adversity, characterizing their performance as a moral victory despite claims of electoral manipulation. इलेक्शन हम जीत चुके हुए हैं। अब ये टेम्पर जितना मर्जी करके हमसे वो लेना चाहें, लेकिन इलेक्शन मॉरल विक्ट्री जो है वो हमने अपनी इस्टेब्लिश कर दी है। और जिन नामसाइद हालात में PTI ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, जिन नामसाइद हालात में हमने 2 साल गुजारे और जिन नामसाइद हालात में हम आज का दिन भी देख रहे हैं कि किस तरीके से ये रिज़ल्ट्स को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लीमेंट जाता है वो हमारे आवाम को जाता है, हमारे फॉलोअर्स को जाता है, हमारी पार्टी को जाता है, एंड अबव एवरीथिंग एल्स वो इमरान खान साहब की ज़ात को जानता है, जो कि जेल के अंदर आज इतनी पावर एक्सरसाइज करते हैं जो कि शायद पाकिस्तान की पॉलिटिकल तारीख में किसी और लीडर ने एक्सरसाइज ना की हो। In a dramatic escalation of tensions in the region, the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu announced his directive for the military to develop a plan, aiming to both evacuate civilians from Rafah and defeat the remaining Hamas battalions. Tragedy unfolded as Israeli snipers operating in Khan Yunis killed at least 21 people outside Nasser Hospital, with medical staff among the targeted victims. Within a harrowing 24-hour period, the death toll rose to 107 Palestinians, and 142 were left injured. The situation took a dire turn as initial United Nations data revealed that nearly 1 in 10 children in Gaza under the age of 5 were suffering from acute malnutrition. Humanitarian groups reported that Israeli forces consistently obstructed aid, leading to widespread hunger and desperation, with reports of people resorting to eating grass. Amidst the unfolding crisis, the Gaza-based rights group Al-Mezan Center urgently called on the international community to prevent an anticipated Israeli assault on Rafah, where over 1 million displaced Palestinians were trapped with no means of escape.
Tensions escalated further as Reuters reported Egypt deploying 40 tanks and armored personnel carriers to northeastern Sinai, bolstering security near the border with Gaza. This move came as Israel geared up for a potential incursion into Rafah, near the border with Egypt, sparking concerns of a larger geopolitical conflict. Simultaneously, Hezbollah entered the fray, claiming a series of attacks in response to an earlier incident involving one of its regional commanders in southern Lebanon's Nablus. The group reported successful strikes on Israeli spy equipment in various locations, marking a turbulent afternoon for its fighters and adding a new dimension to the already volatile situation in the region.